Hello students, as you saw the basic concept and the meaning of not-for-profit organization in my last video, this video will cover the characteristic or the features of not-for-profit organization. So let us begin. The first characteristic or features of not-for-profit organizations is separate legal entity. Not-for-profit organization is a separate legal entity promoted by individuals or enterprise. It means not for profit organization वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कोई इंडिविजुअल या एंटरप्राइज प्रमोट करता है. सेकेंड इज पर्पस और सर्विस. Not for profit organizations are formed for providing service to a specific group or public at a large, such as education, healthcare, recreation, sports, etc. This organization provides service free of cost or at nominal cost and not to earn profit. It means not-for-profit organization basically a form for providing service. As I told you earlier, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सर्विस प्रोवाइड करती है. सर्विस या तो वो सोसाइटी को या तो वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है. और वो सर्विस जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन डजंट चार्ज एनी कॉस्ट, और इफ इट चार्ज देन द कॉस्ट विल बी एट नॉमिनल कॉस्ट. नॉमिनल कॉस्ट इन सेंस वो प्रॉफिट मार्जिन अपना बहुत लो रखती है. The third characteristic is ownership. It is set up as a charitable society or trust. Thus, it is not owned by any individual or group of individual but belongs to the society. The third characteristic of not-for-profit organization says that it is a charitable trust and it is not owned by any individual. मतलब किसी एक इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या किसी ग्रुप नंबर ऑफ मेंबर्स की बिलोंग नहीं करती है. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को बिलोंग करती है. नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. Not for profit organization is managed by a group of individuals often called trustees or managing committees. The affairs of this organization are usually managed by its trustees or managing committees, which is elected by its members. It means जो भी कामकाज होता है ये ऑर्गेनाइजेशन का वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू होता है और वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है उसके मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव्स. Student, as I said you earlier, not-for-profit organization serves the society. Their main objective is to provide the benefit to the society, not to earn the profit. So, not-for-profit organization does not function with the objectives of earning profit, but it does not mean that it cannot earn profit. Term as surplus. Surplus is necessary to maintain its assets and also operation. Surplus is used for the object for which it is set up and is not distributed amongst its members. It means not-for-profit organization जो होती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट उसका ये नहीं मतलब है कि वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते. वो जो सरप्लस अर्न करते हैं उससे वो एसेट्स और ऑपरेशंस जो करते हैं उसके लिए वो फंड उन्हें या सरप्लस यूज होते हैं. और जो सरप्लस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उसके मेंबर्स में. इसलिए कहा गया है कि प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट इफ they earn their surplus then they don't distribute the surplus to its member but they use that surplus in the operation as well as to maintain their assets. Now the next characteristic is source of income or fund. Fund required for its operations are given by its members and donor. जो फंड होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड तो बहुत जरूरी होता है. फंड बिना ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती. तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें जो फंड मिलता है वो नॉर्मली उनके मेंबर्स से मिलता है और उनकी मेंबर्स जो फंड लाते हैं वो फंड जैसे कि एंट्रेंस फीस हो गया,
मेंबरशिप फीस हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गया, या वो डोनेशन देते हैं, ये सारी चीज़ों से जो फंड इकट्ठा होता है वो फंड से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है. नेक्स्ट इज कैपिटल फंड. The fund raised by not-for-profit organization through the various sources are credited to capital fund or general fund. वो फंड जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करती है उसे हम कैपिटल फंड या जनरल फंड बोलते हैं. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर कैपिटल फंड इज सरप्लस. The surplus generated in the form of excess of income over expenditure added to the capital fund. Deficit, if any, is subtracted from the capital fund. It means here I said you two things, that is the surplus and the deficit. If surplus is found, that is income over expenditure. Excess of income over expenditure. If you found surplus, then that surplus is added towards the capital fund. And if it's deficit will be excess of expenditure over income. If we found deficit, then we subtract it from the capital fund. Now the next point is account of financial statement. Annual accounts of not-for-profit organizations comprises of receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. After the accounts, the next point is accounting information. The accounting information provided by such organization is meant for the present and potential contributor to meet the statutory requirement. The next point after accounting information is to earn reputation. The not-for-profit organization earn their reputation on the basis of their contribution to the welfare of the society rather than on the consumers or owner satisfaction. It means that the not-for-profit organization जो होती है वो अपनी reputation या अपनी goodwill जो होती है वो उस बेस पे अर्न करती है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, ना कि वो कस्टमर्स के या कंज्यूमर्स के या ओनर्स के सेटिस्फेक्शन पे लगे रहे. इट मीन्स जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेनली उन चीज़ों पे ध्यान देती है जहाँ जिस चीज़ से सोसाइटी का भला हो. तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उन्हें उस चीज़ों से ही अपना रेपुटेशन मिलता है और वो जितना वेलफेयर करती है सोसाइटी का उतना ज़्यादा उनका रेपुटेशन इंक्रीज होता है, ना कि वो सिर्फ ये ध्यान दे कि मेरा कस्टमर्स है, जो मेरे कंज्यूमर्स है या जो ओनर्स है वो सेटिस्फाई है कि नहीं. आफ्टर दैट पॉइंट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रांजेक्शन. मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर इन कैश और थ्रू द बैंक. इट मीन्स जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज़्यादातर या तो कैश ट्रांजैक्शन करती है या बैंक थ्रू ट्रांजैक्शन करती है.